वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स. आज हमारे साथ जो साहब मौजूद हैं उनका तारुफ कराने से पहले आई वुड लाइक टू फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन अ कपल ऑफ थिंग्स. एक तो ये कि मैंने तकरीबन 2 एपिसोड्स पहले आई डिड अ पॉडकास्ट विद ए स्टार्टअप एंड लॉट ऑफ यू वर सेइंग दिस इज दिस अ स्पॉन्सर्ड कंटेंट. इट इज़ नॉट. वी डोंट डू स्पॉन्सर्ड एपिसोड्स. वी डोंट टेक मनी फॉर एनी कन्वर्सेशंस. आज भी वी आर एक्सप्लोरिंग अ स्टार्टअप एसेंशियली और अ बिजनेस. विल नो मोर. But this comes under the, so we have like 3 pillars: art, culture, and technology. This comes under the technology pivot of the podcast. So anyways, just wanted to make that clear that we don't do sponsored conversations. And अगर हम कोई sponsor लेंगे भी तो वो primarily segments होंगे 15-20 सेकंड के. That's going to happen after 500,000 subscribers. So it's still a long way to go. But anyways, एक तो ये बात ही. दूसरा ये कि we also started a new podcast. It's called the Pakistan Pivot, जहाँ पर हम different गवर्नमेंट के और पॉलिसी मेकिंग सर्कल्स के और एकेडमिक्स से कॉन्वर्जेशंस कर रहे हैं ऑन करंट अफेयर्स, रीजनल पॉलिटिक्स एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स. सो इफ़ यू वांट टू चेक दैट आउट, वी गोना हैव अ लिंक डाउन बिलो पाकिस्तान नाउ चैनल के ऊपर. पाकिस्तान पिवट इज़ लाइव. यू कैन चेक दैट आउट. बट एनीवेज, आज हमारे साथ मौजूद हैं कामरान शौकत साहब, who's the co-founder and CEO of Ezbuy Pakistan, and also KIAN Furniture. Sir, thank you so much for taking the time out and joining us. Thank you for having me. I'm going to start this conversation with just sort of trying to understand आपकी personal journey क्या रही है. From high school till date, you एक तो obviously doing these are 2 very different sort of businesses. एक तो purely e-commerce है, in a very sort of emerging market. और दूसरा जो है वो एक furniture, B2B furniture है. We'd love to know more about that as well, but just sort of starting with your journey. Journey from childhood or from college? High school. So my journey is not in one place. I'm the only son. Parents are educationists. I did my O-levels from Jeddah, Saudi Arabia. Father was teaching in King Abdulaziz. And then he shifted back and we came back. Second year मैंने Sir Sayyid Pindi से किया, FSC, because federal board था. उसके बाद I went to UET, Lahore. Right. Batch of 88 and कत्ल हो गया कैंपस पे. डेमोक्रेसी उस वक्त वापस आ रही थी. कत्ल हो गया. हाँ, कत्ल हो गया. आई से इट इन अ वेरी स्ट्रेटफॉरवर्ड. हो गया. तो अम्मा ने कहा कि ट्रांसफ़र करा लो. अब्बा ने कहा कि बैचलर्स कर ले, बच्चा ख़राब हो जाएगा बाहर बैचलर्स करने के लिए. बट अम्मा गॉट हर वे. दे डिडंट बिल्ड देयर हाउस. दे सेंट मी टू द US. फिर यूनिवर्सिटी ऑफ मेरीलैंड से मैंने कंप्लीट की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. वापस आए पाकिस्तान एंड आई जॉइंड Alcatel. तो उसके बाद मेरी प्रोफेशनल करियर शुरू हो गई. Alcatel at the time was doing ये मोबाइल फ़ोन के PABXs and telephone exchanges. Right. They had a BLT contract with the government of Pakistan, very close to here in Islamabad actually. Right. And I joined as a production planner in 93. Right. And how long were you there? I was there for 5 years. Achha. So, Alcatel, it was the best thing that happened to me because it made me understand production, manufacturing, a little bit of quality control, and what it means to be part of a global organization. And also, if I may, if there's one thing that I learned from Alcatel, it is that if you have a good process, you'll get the same product each time. Right. If you don't, you'll have a piece of art. Right. So in a lot of times, Pakistan is good at manufacturing in certain things, but usually we see production में कि process नहीं है, systems नहीं है, तो pieces of art है. At the end, you can't scale it, right? Yeah, 100%. And you need that for different supply chains. So Alcatel was great. It was like my first love, like your first kiss. So Alcatel, I was there till 97. Right. And then what did you do after that? हाँ, उसके बाद I joined a tobacco company. It's kind of weird, but I like I have like an itch after 3 to 5 years. Right. And I say कि यार इससे बेहतर क्या कर सकता हूँ. Right. या कुछ सीख लेता हूँ या पैसे कमा लेता हूँ. But it's part of my journey, and I joined this Dutch tobacco company called International Tobacco Machinery. Right. And their gig was pretty neat actually. वो अफ़गान वॉर तो ख़त्म हो रही थी, तो in order to discourage warlords in Afghanistan from growing opium, USAID used to give them money to make tobacco machines कि ये सिगरेट बनाएंगे. Lesser evil. Right. So that was the gig. तो वो आके बोरियों में हमें पैसे देते थे. मैं उनका मटीरियल्स मैनेजर था. वहाँ और भी
बड़ा कुछ हो रहा था उस प्लांट में, बट इट वाजंट अ कल्चर दैट आई कुड सस्टेन. अल्केटेल तो 5 साल में सिस्टम्स प्रोसेसेस की मैं बात कर रहा हूँ. यहाँ इट वाज वेरी रॉ, अंडर द टेबल एंड सॉर्ट ऑफ. वो भी था, लेबर अब्यूज भी थी, व्हाटएवर यू कैन इमेजिन हैपनिंग रॉन्ग फ्रॉम लेबर लॉज वो हो रहा था. एंड सीखा उससे भी बड़ा कुछ. तो वो जो इच थी वो फिर साल बाद शुरू हो गई. And then, one thing led to the other. I've always had good mentors, right? So McDonald's was coming to Pakistan. Right. And having an, engineering background. But truth be told, I was never an engineer, right? So अम्मा अब्बा ने कहा कि यार डॉक्टर इंजीनियर बन जाओ, शादी हो जाएगी. तो शादी तो खैर हो गई बड़ी अच्छी, but it wasn't like I was an engineer. Somebody calls me an engineer. No, I'm not an engineer. I have a good knack of things, I think. Right. तो मेरे मेंटर ने कहा कि व्हाई डोंट यू अप्लाई. तो इंजीनियरिंग में मैंने मेरीलैंड में देखा था मैकडोनल्ड्स वाज अक्रॉस द रोड, एंड आई सेड व्हाट एम आई गोना डू देयर टू बी अ बर्गर फ्लिपर. So I mean, my mentor guided me. He said, okay, it's not about burger flipping. If some company is opening a store somewhere in the world every 20 minutes, it's got to be a machine. Right. You got to learn. And then, I was lucky again. I got my offer on the same day Pakistan exploded its nuclear devices in 98. Right. And I joined McDonald's in June. In Pakistan or? In Pakistan. In June 98. Right. What was the position? So the position was called equipment manager. Right. And equipment manager might be misleading, but McDonald's generally is divided into basically 2-3 different areas. Primarily is operations, which runs the restaurants, right? Then a clear area is called real estate, which holds the P&L. And then anything, if you take a restaurant, turn it upside down and shake it, anything that falls out is equipment. Right. So it's like equipment, seating, signage, decor. Right, furniture, everything, kids play the whole area. gambit. And that's where, in 98, मैंने realize किया कि actually production and manufacturing तो एक small element है. You may not be even manufacturing anything. Key thing is कि brand or selling or marketing किस तरह करनी है. And in September 98, our team opened Pakistan, which... in Karachi, I believe, for the first time. Yeah, वो भी बड़ी interesting story है. सुनेंगे? सुनाएं, sir. The country opening was supposed to be in Karachi. Right. At Golden Gate. तो उस वक्त एक कैरेक्टर था called उसामा बिन लादेन, अगर आपको याद होगा. Right. तो he had bombed some embassies, US embassies in Kenya. उस वक्त उनका एक और कैरेक्टर US का होता था, क्लिंटन, याद है आपको? Right. क्लिंटन ने क्रूज मिसाइल्स फेंके उसामा में के ऊपर. Right. वो उसको मिस हो गए. बट ये गोल्डन गेट कराची के साथ कोई मदरसा था. तो इनडायरेक्ट आप कॉजालिटी देखें कि वो मदरसे से स्टूडेंट निकल के दे स्टार्टेड पेल्टिंग द टू बी मेड रेस्टोरेंट. तो वो घबरा गए जो अमेरिकन थे, उनको क्या पता था, नाइव सी दुनिया थी उस वक्त, उनका ख्याल था कि गुड और बैड गाइज होते हैं सारे. तो उन्होंने कहा कि यार फिर कंट्री ओपनिंग लाहौर शिफ्ट कर देते हैं. Right. तो सितंबर 98 वी ओपन द country opening लाहौर. We broke the South Asia records. And I dare say, and I'm still in touch with our teams because of technology even now, that was the best operations team I've seen. Achha. Ever. You see the passion in them. और जितनी awards उन्होंने जीती हैं. I mean, we had people in the morning who fainted in line. 22,000 लोग थे पहले दिन. And we thought we'd be in trouble. And the same people we saw in the evening. Some, female customers even. And the drive-through queue, if you know Lahore. 63 मेन बुलेवार्ड पे खुला था, एंड द ड्राइव थ्रू क्यू वेंट टिल मेन जो गुलबर्ग है, द बिग सर्कल. उसमें टांगे भी थे, उसमें मोटरसाइकिलें भी थी, साइकिलें भी थी, गाड़ियाँ भी थे, मियाँ साहब भी थे, 2 फिले फिश और फैंटा वाले. मियाँ साहब का मेरा ख्याल दूसरा दौर था उस वक्त. और इट वाज जस्ट अमेजिंग. सो उससे मुझे रियलाइजेशन हुई कि मे बी दिस इंजीनियरिंग डिग्री इज़ रियली मिसप्लेस्ड. आई नीड टू गेट एन MBA. Right. And so I started agitating and itching again, and I said कि यार MBA करना चाहिए. So then 9/11 happened. And उस वक्त हमारे 20-22 स्टोर थे पाकिस्तान में. And lucky enough, I made some processes that they liked and scaled in the Middle East. And McDonald's, if I was to say one or two things I would learn from them, because I've been with so many companies, I'm probably going to write a book. And McDonald's will have 2-3 chapters in that book, because उससे सबसे ज़्यादा learning भी हुई है और मज़ा भी आया है. वो ये है कि यार your suppliers are your arms and legs.
and to treat them with respect, 1 plus 1 can be 11. Right. Because they know more about the customer than you individually as a company. You only know your company. Right. तो बहुत कुछ सीखा McDonald's ने, and they transferred me to Chicago for the purpose of actually going to the University of Chicago. Really? Yeah, they enabled it. Well, my bosses enabled it as well. So from all the way from Pakistan, उन्होंने कहा कि जी, let's make this happen. Let's make this happen. They actually flew me to Singapore for the interview. Right. When I got admitted, फिर उन्होंने realize किया कि यार यहाँ ये कमाता रहा तो ये तो payback कर ही नहीं सकता कोई भी element. So they said corporate would get me there, salary is different है वहाँ, and then I'd be able to pay for it, go to a school that I really wanted, and they made it happen. And so this is 98. You did your MBA? No, so then they transferred me after 9/11. Na? Achha, after 9/11, right. They transferred me in early 2002. Right. तो यहाँ halt हो गया था सब कुछ. उससे पहले this was a joint venture. Right. And now it became a wholly owned subsidiary, a franchisee, and my bosses sold out to the other party. Right. And I moved to Oak Brook, Illinois, Chicago. Right. Yeah. So basically जो पाकिस्तानी पार्टी थी essentially उन्होंने buy out कर लिया हुआ था. दो parties थी ना. They each had one city at that time. People used to think it's North and South Pakistan. It wasn't. It was Lahore and Karachi only. The Karachi people bought out Lahore. The Lahore. Right. And so MBA, 2 years or 1 year? 2 years. 2 years. And then उसके साथ साथ आप McDonald's में जी job कर रहे थे. executive MBA था. ठीक हो गया. और वहाँ पे nature of the job was different? अच्छा, nature of the job was similar, मगर एक regional और global level की हो गई. Right. तो वो जी मैं कहता हूँ ना कि जितना बड़ा pond उतनी बड़ी मछली. Right. So I was an equipment manager here. There I became regional equipment manager and then global for certain pieces of equipment. And one of them was furniture. So yeah, uska I mean, then I learned कि यार what makes America tick, right? Right. It's certainly not कि यार ये पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं, बहुत तरक्की कर ली, इनका कुछ करना है. It's not that. उनसे जितना मैंने सीखा है, I mean, and I can actually segment कि मैंने इतनी companies के लिए काम किया है. I think the American companies are very successful because they take the best out of people. They play to people's strengths. Right. And they pay them according to what they can deliver and their brain power, not where they're from, not what their religion is, not what their gender is, right? तो बहुत कुछ सीखा McDonald's ने, and then 2004 में McDonald's stock price crashed and it was becoming irrelevant. Yeah, क्योंकि just like newer brands were basically taking on the market. Yeah. So newer brands globally were taking over, like Starbucks, like In-N-Out Burger, Right. और brands आ रहे थे. फिर वो रोनल्ड मैकडोनल्ड्स का स्टैचू जिन नेबरहुड्स में था वो लोग बड़े हो गए थे, बच्चे थे ही नहीं. वो मैंसर्ड रूफ था, डिज़ाइन भी पुराना था. तो स्टॉक प्राइस क्रैश हो गई, कोई $10-12 पे आ गई फ्रॉम 40. Right. एंड सीरियस किस्म की थिंकिंग थी ओक ब्रुक में कि यार इसको रेलिवेंट किस तरह करें. And Oak Brook is essentially their global headquarters. It was their global headquarters. They've shifted to downtown Chicago now. Say. So then, armed with my MBA, and MBA करने तो मैं इसलिए गया था, truth be told, to get a degree and earn lots of money. But I think they gave me something priceless after 6 months, and that is the confidence that I could run any company in the world. That's just amazing. And an alumni network of 40,000, I can probably tap into any company in the world right now. It's And they're very responsive as well, the alumni network? So alumni network depends on the alumni, but generally they're responsive. And then you have career development services for life. Right. So, until I'm alive, they'll hold your hand, right? So, after my wife, I guess it's the best thing that happened to me. And मैंने उसमें फिर क्योंकि मुझे एज हो रहा था फिर, तो मैंने उनको कहा कि यार मेरा कुछ करो, नहीं तो मैं सिर्फ इमिग्रेट करने तो नहीं आया ना अमेरिका. तो उन्होंने कहा ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर देते हैं. तो आई मीन दीज थिंग्स आर मीनिंगलेस. ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो फिर क्या होगा? बात तो ये है कि जॉब आप सस्टेन करें या ग्रो करें. तो आई स्टार्टेड लाइक एजिटेटिंग इन ओक ब्रोक. मैंने बॉस को तंग करना शुरू कर दिया. और मेरा जो बॉस था ना, उसको रेक रॉक ने हायर किया था. अच्छा. So one level, Ray Kroc is the founder of McDonald's. Right. So I was one level away from his philosophy. और आप philosophy देखें कि कितनी ज़बरदस्त थी
कि उसने मुझे कहा था कि तुम काम पे जब आते हो, you can study here. अच्छा. And I said that, how can I study? I feel bad because other people are working on projects. He said, you can't do both. So I'll give you fewer projects. You focus on your studies. And I was amazed. And I asked Bill one day that I feel really guilty. I mean, why are you doing this? He said that I did the same and Ray Kroc told me this. And when you've gone too far, don't worry. The boss knows everything. We'll tell you to stop. So please focus on your MBA. It's a tough one. And it was a tough MBA. So coming back to McDonald's, the irrelevance, I took their numbers to University of Chicago and told my professors कि ये हो रहा है. And my professor says, and some days, some weeks, some month, the stock price used to become 12 out of 10. फिर 10 हो जाती थी. तो मेरे प्रोफेसर ने कहा कि this is a dead cat jump. So मैंने कहा, what's a dead cat? तो उसने कहा, that's when you throw a dead cat off the roof, it jumps once or twice before it dies. McDonald's done. तो मैंने आके अपने बॉस को बताया. तो उसने कहा कि you just watch what happens. And so they hired a brilliant chief marketing officer called Larry Light. And he came up with this concept called Forever Young. And Forever Young is that you can be perpetually young forever as a brand by reinventing yourself. So how do you do that? You do that, for example, like जो हमारे अब्बा हजूर हैं, उनके ज़माने में शॉन कॉनरी था. तो बॉन्ड तो अभी भी है, मगर बॉन्ड नया है. वोक्सवैगन उस वक्त भी थी, वोक्सवैगन अभी भी है. So these brands kind of reinvent. उन्होंने कहा कि हम रीब्रांड करेंगे McDonald's and make it relevant. हम अपने जो हेल्दी मेन्यू भी लाएंगे, हम environment more, they call it more of a cafe feel, like Starbucks, because Starbucks was really hurting them. वो बनाएंगे और हम अपना फसाद चेंज कर देंगे बाहर. वो बेचारा रोनाल्ड मैकडोनल्ड, विल गेट रिड ऑफ हिम, स्पेशल इवेंट्स ओनली, या वो जो स्पेशल चिल्ड्रंस डे का होता है, रोनाल्ड मैकडोनल्ड हाउस एंड सो ऑन. सो उन्होंने दे पुट टुगेदर अ टीम ऑफ 16 पीपल एंड I just volunteered. I said, oh, me, please choose me. I'll be part of this for all of your development needs. So उन्होंने कहा कि ठीक है, what can you do for us? And of all the companies I've worked for, I think McDonald's is probably the most global, then followed by Shell. But McDonald's was amazing. They chose me and said, what can you do? I said, I'll reduce your cost by half. Because it's a franchise system. Na? 80% to franchise stores hain. So if you come up with a very expensive concept for your store and relevance and interior decor and expensive seating, if they can't afford it, तो फ़ायदा ही कोई नहीं ना. तो मुझे एशिया का तो पता था कि ये जो है, I knew the suppliers, I knew my Chinese suppliers, और उनसे हम ट्रस्ट भी करते थे बड़ा. मैं कहा कि यार नंबर्स तो बाद में है, Bill, I'll do it for half. Landed. He said, no way. I said, yeah, I mean, you're sending American furniture and claddings and signage across the world to Latvia and Poland and to Pakistan, a pylon sign pole from Cyprus. They had no idea Pakistan kya hai. वो pole मंगवा रहे थे Cyprus से. I'll do it for half. He said, okay, where do you want to be based? And my father was teaching at the International Islamic University in Kuala Lumpur then. उस वक्त तक I had 3 kids by now. I said, यार ये तो ज़बरदस्त है, I can be based anywhere. तो Malaysia चलते हैं. तो Kamran and his wife then relocated to Malaysia. And उन्होंने green card के लिए apply कर दिया था. Never, when I landed in Malaysia, 6 महीने मुझे लगे, मैंने कहा मैंने तो वापस नहीं जाना. This is great यार, beaches भी हैं, tropical weather भी है. It's very odd though. I mean, that's a very odd thought process, right? Yeah, like you yeah. were there and you didn't. Green card was the last thing on your mind. No, green card wasn't on my mind. It takes too long. या तो महीने में दे देना और अगले महीने citizenship दे दे. You didn't want to be tied down essentially, right? No. Life is not about that. It's not about them. It's about us. So, my thing about life and brand is your own brand is important, more important than any of these companies. Because आप भाग सकते हैं किसी भी कंपनी से, अपने आप से नहीं भाग सकते. तो आपका जो ब्रांड है, you have to be true to your brand, what you believe in, and then try to work on your strengths. That's it. Learn from your mistakes. तो उन्होंने ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया, तो मैंने 6 महीने के अंदर फिगर आउट कर लिया कि यार मैंने तो वापस नहीं जाना. यहाँ मेड भी है और यहाँ लॉन भी नहीं मो करना पड़ता, सर्दी भी नहीं है, बीच भी है, बच्चे भी खुश हैं, बेगम भी खुश है. So it's like heaven, right? So और शिकागो का तो -10, -12.
Yeah, I mean, वो भी अच्छा था. अच्छा. अंदर तो शॉर्ट्स में हम फिर रहे होते थे. Right. तो if anything, पूरी दुनिया में अगर कोई मुल्क में कहूँ, from an immigration point of view, even now, after everything that's happened, there's nothing like the US. Right. तो वो तो हम साइड पे रख दें, क्योंकि मैं और मुल्कों में भी रहा हूँ, और every country has its issues and you can't really settle as an immigrant unless you're from there. Maybe Malaysia you can, right? So मैंने फिर यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो अपने काउंसलर को कॉल किया. मैंने कहा यार ये तो जन्नत है, मैंने यहीं रहना है. कहते ओके लेट्स डू समथिंग. सो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो हैज़ 3 campuses. Then it was Singapore, then it was Barcelona and Hong Kong. Now it's London, Hong Kong and Chicago, of course. तो उन्होंने अपने नेटवर्क घुमाना शुरू किया. And in the end it's the network. It's not what you know, it's how much risk you take and the network, right? And you can press certain buttons. तो उन्होंने हेडहंटर से किया, हेडहंटर ने शेल को किया, शेल मिल गई, रॉयल डच शेल. तो आई जॉइंड रॉयल डच शेल in 2007. Sorry, I'm confusing you. थोड़ा सा मैं कर रहा हूँ. Alcatel जी production planning. Completely. So essentially core same है, but Core same है. you're just jumping around in industries. No, yeah, so I'm cross industry. Yeah. But core एक ही है, procurement and supply chain and sourcing. Core जो है ना, वो same है. It's a bit like saying कि यार फाइनेंस का बंदा, अकाउंटिंग का बंदा, तो कोर एक ही है, जहाँ मर्जी चले रहे. तो ये इसी तरह था. पीपल चूज टू स्टे इन द इंडस्ट्री. आई चूज नॉट टू, बिकॉज मैं कहता हूँ कि यार अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ कहीं और कोई मुझे ले रहा है, तो मियाँ बीवी राजी, तो तीसरा कौन है काजी. सो ओके दे हायर्ड मी एंड शेल वाज वेरी टफ जॉब, वेरी डिफरेंट. तो शेल में आई बिकेम हेड ऑफ कैपेक्स एंड ऑपेक्स ग्लोबली फॉर शेल रिटेल आउट ऑफ सिंगापुर. Right. And मुझे पता भी नहीं था कि जॉब क्या है. Can I pause you here? Like, did you imagine you'd be doing all of these things at this time? For example, in Kuala Lumpur, you're with your wife and you're with your kids and you're managing Shell, right? Like Shell or McDonald's. Shell and McDonald's का तो for Pakistanis particularly, it still took a while for that brand to become global. कि वो context आपको मिला कि यार ये तो बहुत बड़ा brand है, बड़ा global brand है, और उस तरह से Shell तो हर बंदा जानता है एक मगरमच्छ है. For that to be in that position, did you ever sit down and sort of basked in what you'd achieved? No, I didn't, because you were still thinking, yeah, nahin, where's the next step? Yeah, I was, and it wasn't about me at all. Right. It was just about right time, right place. I think taking the right risk and luck कह लें, खुदा कह लें, जो मर्जी कह लें आप, but it was that. And one of my favorite movies is The Croods, right? It's an animation by Pixar, I think, or some Disney, where there's cave people और एक लड़की है character who wants to go out and explore the world. और family obviously कहती है no, don't, you'll get hurt. But उनके सारे neighbors, there's an earthquake and they get buried, and some neighbors go out and the dinosaur eats them. But she goes out and eventually she benefits. So I think, I've been lucky in that sense, having worked for some of the largest brands and learned from them. And yeah, no, it wasn't me at all. वो तो नहीं होता इस तरह. But what can somebody take away from that? I think work hard, take risks, and believe in yourself and God, and eventually it works out. Okay, so reverting back, I apologize. Reverting back to this new position at Shell, you're managing, what are you managing for the entire work? I'm managing CapEx, OpEx, so in a simple way, money that's being spent on all global retail stations for Shell, so out of Singapore. Gas stations and petrol gas station दुनिया के सारे out of Singapore. And so I didn't know what the job was ना. तो वहाँ से मैकडोनल्ड्स में तो मैंने सीख लिया था 1 + 1 = 11. तो मैंने शेल ज्वाइन किया तो my boss sat in London, a Scotsman, and I grew up in Scotland. I didn't mention that, but I have a certain affinity and a love for Scotland. What did your father teach, considering he was, as an educationist, you wouldn't expect this person to be moving around so much? No, my father's a big man. It's difficult to follow underneath his shadow. So he did his master's and PhD from the University of Edinburgh. तो हम तो बच्चे थे उस वक्त, but Scotland में it's a growing age ना. Right. So बड़ा बंदा, I still consider it my second home. And I try to go back whenever I can. So my father did that, and then he taught in these different places. He's also a political cartoonist, retired now. Really? And so Very वो cool. करते हैं. So Very cool. तो
शेल में जब गया तो हफ्ते बाद मेरे बॉस ने कहा आप लंदन आ जाएं और ये कॉन्ट्रैक्ट है हमारा ग्लोबली फॉर ऑल ऑफ आवर सप्लायर्स, ये पढ़ के आना। तो मैंने कहा ओके। तो अटैचमेंट थी, जब डाउनलोड किया वो डाउनलोड ही ना हो। भैया क्यों नहीं डाउनलोड ही? मैंने अपने किसी छोटे को बुलाया कि करो इसको प्रिंट आउट करो। उसने प्रिंट आउट करके मुझे कोई 800 पेजेस की थद्दी दे दी। तो मैंने कहा कि यार ये तो ज़बरदस्त है, मैं ये फ़्लाइट पे पढ़ूँगा। ऐसी कोई चीज़ मैकडोनल्ड्स में नहीं थी। What Ray Kroc had taught was everything of any meaningful sense with suppliers happens over a handshake. If you're going for a contract, you don't really trust each other. वो रे क्रॉक फौत हो गया, बाद में लीगल वाले इन्वॉल्व हो गए और लोग इन्वॉल्व हो गए, डब्बे उन्होंने खूब क्रिएट किए, तो इट इज़ व्हाट इट इज़। बट इसेंशली जब वो 800 पेजेस की थद्दी मैंने प्रिंट आउट की, मैंने कहा कि यार रास्ते में पढ़ूंगा। तो माई फ़्लाइट टुक ऑफ फ्रॉम सिंगापुर, 13 घंटे की फ़्लाइट है, हेडविंड के साथ 14 घंटे। तो आफ्टर एन आवर जब आप समिट पे पहुंच जाते हैं कोई 40,000 फुट पे, मैंने कहा कि यार इट्स अ चॉइस बिटवीन दिस कॉन्ट्रैक्ट एंड 2 रियली इंटरेस्टिंग मूवीज़, सिंगापुर एयरलाइंस। मैं तो पढ़ूंगा ही नहीं। मैंने आखिरी पेज देख लिया कि KPIs क्या थे, 90 KPIs थे उनके। तो अगेन जस्ट लाइक टोटली एंटी क्राइस्ट, एंटी थीसिस। अगर 90 KPI हैं इनके, ग्लोबली शेल रिटेल मैनेज के लिए बेसिकली कुछ नहीं है इनके पास। तो खैर मैं लैंड हुआ लंदन में, पता चला यार कि मैकडोनल्ड्स ही नहीं है। आई मीन शेल आफ्टर द क्वीन हैज़ द मोस्ट रियल एस्टेट इन लंदन, एंड शेल, मदर शेल वाज क्वाइट अ बीस्ट देयर। वो भी बहुत अच्छे थे मैकडोनल्ड्स पे, बट हियर शेल ना, शेल हाउस था, अगलीस्ट बिल्डिंग इन लंदन ओवरलुकिंग द टेम्स। एलन मैकनाब ऊपर बैठा हुआ, बहुत सॉरी आई शुडंट से नेम्स, बट वहाँ बुलाया और कहा हैव यू रेड द डॉक्यूमेंट? मैंने कहा yeah, I skimmed through it. He said, what do you think? I said, let's have a chat. Let's have a coffee. I think we should have 5 KPIs instead of 90. He said, explain more. I said that it's so complex because Shell is very good at processes. The Shell has probably some of the best talented high IQ people, which I was not. So मैं तो वैसे ही outlier था. But it has a lot of money through upstream oil. और डाउन स्ट्रीम बिजनेसेस में उन्होंने डिफरेंट दुकानें खोली हुई हैं, दुकानें कह लें। सो फॉर द सेक ऑफ द ऑडियंस, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम को थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन कर। अपस्ट्रीम तेल निकालते हैं, ठीक है, नीचे वाले डाउनस्ट्रीम तेल बेचते हैं, ठीक है। अब वो मरीन को बेचें, एविएशन को बेचें, रिटेल को बेचें, धंधा है ना, डिफरेंट दुकानें हैं। सही है। तो उनकी विजन, मैकडोनल्ड्स की विजन क्विक सर्विस, क्वालिटी, वैल्यू इस टाइप थी। इनकी थी मोर अपस्ट्रीम, प्रॉफिटेबल डाउनस्ट्रीम। राइट। तो अगर तेल की कीमत गिर जाती है तो ये डाउनस्ट्रीम में प्रॉफिटेबल हो जाते हैं, तेल की कीमत ऊपर चली जाती है, अपस्ट्रीम में प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। तो ज़बरदस्त उनकी गिग है, राइट। हाँ। तो अब रिटेल का मैं पार्ट था, तो मैंने उनको कहा कि यार अगर आपकी इफ़ यू वांट, कहते देयर इज़ वन प्रॉब्लम। मैंने कहा व्हाट? वी हायर्ड यू टू एक्चुअली आउटसोर्स ऑल ऑफ इंजीनियरिंग, इट्स कॉल्ड इंजीनियरिंग, outside Shell. So we have 1,000 engineers in 40 countries. In the next 2 years, you got to make them down to 20. And outsource the whole function. यानी जो पंप बनाते हैं और जो मेंटेन करते हैं उनको आउटसोर्स कर दो. And we have a few suggestions. And we actually were going after J&J, McDonald's and a couple of other companies that were very strong in suppliers. तो आपका ये काम है. So for the audience, by the way, I used to have a full set of hair in black. Now I don't. I think Shell did it to me. I mean, going around 25 markets, laying off people and, outsourcing it, it just was different. It's a cross-cultural experience. I mean, McDonald's would have localized that. हुआ होगा उनके पास भी, but ऐसा मैंने कभी नहीं देखा था. And bringing my spend, we used to spend about $1 billion globally on all of this activity to $660 million. इस पे ये मेरा ये KPI था. तो ये जो किया, इसमें मज़ा भी आया, but strangely enough, I made a lot of friends because when people are under stress, then you see the best and worst in them. And some of them, even after leaving Shell, became my friends because Shell was very generous in compensating them while they left the company. But it was exhausting, as you can imagine, emotionally exhausting and physically flying all over the place with the family, based in Singapore. तो मैंने कहा कि यार supply chain procurement wise, what could be bigger and better than this? तो मैंने वही 3 साल 3.5 साल हो गए थे.
मैंने फ़ोन घुमाना शुरू कर दिया अपनी यूनिवर्सिटी को. उन्होंने कहा what do you want to do? I said no, I want to work for an American company probably in retail, because अब मेरा retail बनता जा रहा था forte. So one thing led to the other. I found Walmart, which is the biggest supply chain on the planet, and it's quite a beast, and $500 billion top line, which is 20 times Pakistan's budget or something. Right. So I joined Walmart Global Sourcing as a senior director, strategic sourcing, based in China in 2010. And वही कॉन्फिडेंस तो दे दिया था ना MBA में कि पता नहीं आता या नहीं आता, कॉन्फिडेंस था कि ये कर लेंगे. तो जब मैं पहुंचा तो आपके भाई का एक ज़बरदस्त दफ्तर था, ग्लास तक सीलिंग थी, ओवरलुकिंग शेंजन. अच्छा. एंड चाइना वाज अ बिग पार्टी देन, इट वाज लाइक अ बिग लास वेगस, और बड़ा कुछ हो रहा था वहाँ. बट आई हैड probably in supply chain the most interesting job in the world, which was, पहली जॉब ये थी कि आप डिफ़ाइन करें कि हमारा सप्लायर बेस कहाँ होना चाहिए, किन मुल्कों में, और इसको कितना बिज़नेस देना है. ये आप हमें 3-6 महीने दे दें, और ये आपके पास 3 MBA टाइप लोग हैं आपकी टीम में. तो वो 3 MBA टाइप थे, एक इंडिया से था, एक चाइनीज़ था, एक पता नहीं सैन फ्रांसिस्को से MBA करके आया था. एंड यू नो बाय दैट टाइम, स्ट्रेंजली इनफ, वी हैड अ सप्लायर मैट्रिक्स, एंड उसमें एंटर, एग्जिट, सस्टेन लिखा हुआ था. पाकिस्तान वाज ऑन द एग्जिट लिस्ट. अच्छा. धमाके बहुत हो रहे थे, और मीटिंग्स के लिए गोरे आ नहीं सकते थे, दुबई में मिलते थे. तो उन्होंने कहा कि यार, इज़ इट वर्थ बीइंग इन पाकिस्तान, बिकॉज वॉलमार्ट हैज़ अ हब हियर, अ बाइंग हब इन कराची. Right. We buy, and I use the present tense for all the companies I work for, because we have sourcing volume of $400 million from Pakistan. अच्छा. जी, even now, अब शायद हायर हो. तो फिर हमने की एक strategy, और ये obviously I was biased to some extent, but I'm agnostic as far as profession goes. What I saw is कि if Walmart exited, it would benefit the competition. Because JC Penney, उसके Kmart हैं, बाकी जो लोग हैं, Michaels है, ये सब एंटर कर जाते to buy up that excess capacity. तो कोई फ़ायदा नहीं था छोड़ने का. यही that basically said, okay, we'll stay on. And after like a year, they started adding other merchandising departments to my portfolio. So then over 7 years, I stayed with Walmart, and I had all of hard lines, all of consumer health and wellness, all of electronics and entertainment, all of toys, and all of seasonal. I myself had a buy of about $5 billion based in China. And this is for Walmart Global, essentially. Yeah, it's for Walmart globally. It includes other brands that are owned by Walmart but may not be called Walmart, like say you Japan, and like Asda was owned by them in the UK. उनके लिए भी sourcing हम लोग ही करते थे. और ये कब तक, कौन से ईयर तक? What was your last year? 2017. Acha. So that's where the story changes, right? You're this corporate guy. Yeah. You were like, you know, okay, like you always revert back to Chicago, and you're like, okay, where's the next gig? Yeah. 17 में something ticked in you. नहीं, वही इच हुई, तो मैंने कहा कि यार इससे बेहतर कुछ करता हूँ. तो इतनी ज़्यादा वो, I mean, it was a big, you know, I mean, Walmart's like an aircraft carrier. It's not easy to shake it. इतनी वो stable job थी. It was kind of, truth be told, really boring at the end. And I don't like boredom. And I said, यार कुछ और करते हैं. बेगम ने मना भी किया कि कुछ और पंगा ना लो, ये अब बहुत हो गया. तो मैंने कहा कि नहीं, I need to learn e-commerce, because that's the next thing, technology. All of these physical things, if not in our lifetime, will be redundant and extinct. I need to be in e-commerce. तो मैंने, अच्छा, by the way, every mentee I had, I would encourage them to, after 3 to 5 years, I'm talking about Chinese mentees, you're Singaporean, learn technology, learn e-commerce, set up your own thing, try. तो उस वक्त तक वो अलीबाबा में चलेगा, कोई eHowDN में चला गया, कोई जिंगडोंग में चला गया, कोई Ezbuy चला गया. तो फिर वो they kept in touch, and I tried for different companies that were well known, but a Malaysian media house, a $1 billion media house, reached out to me, can you head our e-commerce, called Astro. And then I left and joined Astro. Media house. So, I mean,
उनकी e-commerce बड़ी unique थी कि they own studios. So like you have, imagine we were in Pakistan in the 80s, तो एक PTV था ना, तो PTV is like Astro there. ठीक है. It's semi-government owned and it's all regulated. They have 16 channels and they have studios, but they don't have any e-commerce then. So they hired me to run their e-commerce and they made a joint venture with the Koreans called Go Shop. Okay. तो उन्होंने कहा कि यार Koreans, अच्छा मतलब जिस तरह आप सोचें कि पाकिस्तान में आवर आइडिया ऑफ ब्यूटी किस मुल्क को देखते हैं कि यार ये बड़े लोग खूबसूरत हैं? Probably गोरों को देखते हैं, राइट? या recently Koreans को देखना शुरू किया है because of the beauty products and all of those things. राइट. तो पूरा जो ओरिएंट है ना वो कोरियंस को देखता है. Right. Whether they're Chinese या even Japanese या साउथ ईस्ट एशिया, वो पागल हैं कि यार कोरियन, इनको देखो. सही है. तो अब कोरियन के साथ उन्होंने इसलिए जेवी किया, उन्होंने कहा कि इनकी 2-4 मॉडल्स हम बुला लेते हैं, स्टूडियो आप यूज़ करें, कामरान ई-कॉमर्स चैनल खड़ा कर देता है और हम ये बेचते हैं. So चीज़ें मतलब रिटेल चीज़ें हैं. रिटेल चीज़ें हैं, जैसे क्रीम्स हैं, ब्यूटी क्रीम्स हैं, वैक्यूम क्लीनर्स हैं. मगर था बड़ा यूनिक इसलिए कि मीडिया फर्स्ट ई-कॉमर्स एसेंशियली. इट वाजंट अ टीवी पेड टाइप, एक चीप टाइप होता है ना, इस टाइप नहीं है. अब अगर आप यूट्यूब पे जाके करें गो शॉप एस्ट्रो, बड़े हाई एंड और सोफिस्टिकेटेड वो करते थे. एंड आई रीच्ड $50 million with 50 products. That was unheard of because Walmart used to do it over thousands of products. Scale और था ना, इनका scale तो zero से था. So I came back to Kuala Lumpur then. अच्छा. And I forgot to tell you, in between Singapore ने citizenship भी दे दी खुद ही. अच्छा. तकरीबन. So I applied, they gave me a citizenship in 2-3 months. Singapore में the Singaporeans don't want to live there because it's small. They immigrate to Australia. तो जिनके बच्चे अगर छोटे हों and they think they can contribute, I think, to the country, they offer them. So I moved to Malaysia, borders became pretty seamless, and I joined Astro in 2017. Job was very interesting, the culture wasn't. So in that sense, pretty much backfired. How come? I think what was not said was more important than what was said. Okay. And it's a very Far East type thing. I think Pakistanis are very expressive generally. Okay. And even in Western world, people articulate thoughts. यहाँ पता नहीं चल रहा था, हुआ ये था कि पता चला कि यार they had brought me on a remuneration package that exceeded my bosses. The board had. Right. And like वो एक अजीब सी खिचड़ी मच गई. तो I said कि यार बजाय यहाँ वक्त ज़ाया करें, I said like I got to do my own thing. अब ये मुझे इच हो गई, तो do your own thing. And जो मेरी मेंटीज़ अली बाबा वगैरह गई थी, एक ईजी बाय का अली बाबा के बोर्ड पे था, उनको रीच आउट किया. उन्होंने कहा कि यार ईजी बाय जो है, इट्स डूइंग फिनोमिनली वेल इन सिंगापुर. दे ऑलरेडी हैव अ कुक्ड प्लेटफॉर्म and they can pull in any products you want, up to 15-20 million products. आप जो हैं बजाय इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, आप लोकल ऑपरेशंस रन करें, मार्केटिंग रन करें, कॉल सेंटर रन करें, आप इनके साथ जॉइंट वेंचर कर दें. दे एक्चुअली गाइडेड मी. तो मैंने नंबर्स रन करने शुरू कर दिए. उन्हीं के प्लेटफॉर्म पे वी कुड रन नंबर्स इन ईच ई कॉमर्स मार्केट. पाकिस्तान के नंबर्स रन किए 2017-18 में. तो फ्रॉम बिकॉज आई हैव रिटेल बैकग्राउंड, इट वॉज टोटली अंडरसर्व्ड अक्रॉस ऑल 100 डिपार्टमेंट्स. तो मैंने कहा यार ये तो करना है. तो मैंने फिर तैयारी शुरू कर दी. मैंने कहा जाके मिलता हूँ इनके फाउंडर को. तो फिर मैं सिंगापुर चला गया. विंसेंट शोबिन है उसका फाउंडर का नाम. तो जब मैं गया तो आई हैड रियली प्रिपेयर्ड, बट मैंने सोचा कि यार ये नंबर्स हैं. इन द एंड ही इज़ चाइनीज़. अच्छा वहाँ भी ये लोग नेचुरलाइज चाइनीज़ थे जो आए थे. ही इज़ फ्रॉम चाइना बट वाज अ सिंगापुरियन सिटीजन. I am from Pakistan, was a Singapore citizen, but I mean I was myself, but because my corporate background, you dress up in a certain way, you don't say certain things, acclimatize हो जाते हैं आप, नम हो जाते हैं. वहाँ वो टी शर्ट में खड़ा हुआ और शॉर्ट्स पहनी हुई, नीचे फ्लिप फ्लॉप्स. तो वो जो सारे नंबर्स थे तो मैं भूल गया नंबर. मैंने कहा कि यार इसको नंबर्स में नहीं आप हरा सकते, क्योंकि कीड़ा था वो नंबर्स का. मैं कहा Vincent, why I'm here? He said, why? I said, because Pakistan and China are brothers. And I was shocked. He said, yes, I know. That's why I see you. We have many people coming to us to expand in Southeast Asia. Pakistan's really off the radar right now.
I said, why? It's such a large country. I ran the numbers, totally underserved. He said, yeah, but when brothers look after brothers, we need to kind of run some, some P&L, some statements, some cash flow and see where we are. So that was the basis. और अगले 3-6 महीने में मैंने पाकिस्तान 2-3 चक्कर लगाए. विंसेंट आया, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर फिर आया, उसको गोलगप्पे खिलाए, छलियाँ खिलाई. चाइनीज़ से मैंने जो सीखा है अबाउट हार्ड वर्क, आई थिंक दे विल मेक मिन्स मीट आउट ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. दे हैव नो आइडिया व्हाट्स कमिंग अबाउट व्हाट हार्ड वर्क इज़. I mean, those guys are machines, hard work wise, and they have no sense कि यार this is beneath them or higher than them. पैसा होगा स्पेंड करेंगे, नहीं तो वो सड़क पे सो जाएंगे. मैं अगर आपके पास टाइम है एक छोटा सा एग्जांपल दे सकता हूँ. यहाँ इस्लामाबाद क्लब में हम आए रहे क्योंकि इट वाज फेयरली इनएक्सपेंसिव. कमरे ले लिए तो विंसेंट को बहुत मज़ा आया. तो उस ज़माने में यहाँ एक TLP होती थी, फैज़ाबाद धरना हो रहा था. तो उसकी शेलिंग की जो टीयर गैस है ना, वो ओवरफ्लो होती इस्लामाबाद क्लब की तरफ भी आ रही थी. सो विंसेंट कहता है कि व्हाट्स दिस. तो मैंने कहा कि यार इस भाग भूग ही ना जाए. I said it's nothing, it's these Maulvis, we'll call Maulvis, there's something about a prophet. He said, who's the prophet? So सारी कहानी उसको बताई, because they don't believe in anything. Right. सारी कहानी बताई. कहता है, yeah, how many of them? I said, I don't know how many of them, maybe 10,000, maybe 5,000, I don't know. But it's, let's just stay inside because the roads are closed and let's watch a movie. तो कहता है, okay. So we started watching a movie. They have a small theater here in Islamabad Club. खैर मूवी ख़त्म हुई तो दरमियान में ये गया, मैंने ख्याल रेस्टरूम गया होगा. जब निकले तो he wasn't there. अच्छा. मैं सर कि किधर गया है? उसको चौकीदार को पूछा, वो कहता कि वो तो बाहर निकल गया एक चीनी. मैंने कहा किधर गया है यार. सो वी गॉट आउट, वी हैड अ फ्यू लोकल एसोसिएट्स. हमने 1-2 लोग थे पुलिस में जानने वाले, उनको ढूंढा. हम वहाँ गए, उनको पंखे बेच रहा. उनको ही वॉज ट्राइंग टू असेस कि ये लोग ख़रीदते क्या हैं और कैन ईजी बाय प्रोवाइडेड टू दैम. लुक एट द टाइप ऑफ थिंकिंग वी पाकिस्तानीज हैव एंड द चाइनीज़ हैव. हम सोच रहे हैं कि वो भाग जाएगा, वो उधर से भी अपॉर्चुनिटी निकाल रहे हैं. वो भाग जाएगा. एक और एग्जांपल देता हूँ. जब हम चेकआउट कर रहे थे ना इस्लामाबाद क्लब से, पता नहीं 6-7 हज़ार रुपये पर रूम था. तो ये फ्रंट काउंटर पे खड़ा हुआ. तो इसको पता था हमारे साथ ड्राइवर भी हैं. तो थोड़ी देर लग गई, 20 मिनट वहाँ उनके साथ आर्ग्यू कर रहा. तो मैंने जाके पूछा, विंसेंट एवरीथिंग ओके? कहता है, हाउ मच यू पे फॉर 1 रूम? आई सेड 6,000. ही सेड या बट द ड्राइवर पेड 400. आई सेड हाउ डू यू नो? ही सेड आई आस्क्ड देम वेयर डू द ड्राइवर स्टे, why can't we stay for 400 and spend 5,600 on the customer? Well, so I mean if the world thinks they're going to stop China, they have no clue. अभी तो पार्टी शुरू हुई है. Right. And thankfully we're on the right side of the party. थोड़ी सी turbulence आएगी but ठीक हो जाएगा. तो उसके बाद खैर before we move on, and this is more recent and more exciting as well. Just want to understand, you've lived outside of Pakistan for better part of your life. Even growing up, you were in Scotland. Uske baad pe, you were in the US, you were in Malaysia, Singapore, and then back in Malaysia. What made you make that final decision? And you had the passport, so it wasn't even like a lot of times people just like Middle East जाते हैं, they're like यार अब retirement का time करीब आ रहा है तो पाकिस्तान आएंगे, सारा पैसा लेकर आएंगे, घर बना लिया, settle हो गए और नौकरी ढूंढ ली. For you, you had the opportunity to essentially be anywhere. What was the thought process behind thinking, Kayani, maybe I need to take my bets on Pakistan? No, you're using the past tense. I mean, I'm not saying it's done. Yeah. It's a continuum, na? Abhi to journey chal rahi hai. So that's one thing. Second thing is I think this is one of the biggest opportunities for retail in the world. It's a totally underserviced market. If you have like 220 million people, nobody's figured out a way where human beings can survive without food. कोई capsule नहीं आई, ठीक है? So that means if you're in retail food, that I have 10 years of experience with McDonald's, you're going to do well. If you're in clothing, इन्होंने नंगा तो नहीं फिरना, so you're going to do well. They'll need maintenance of whatever they're doing. They're going to get sick. Farmers will do well. So you talk about anything in retail, I think it's the largest underserved market in the world. Right. And so it was purely from that element
कि मैंने कहा कि यार आई हैव गॉट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस. एक तो ये है क्लियर. दूसरी चीज़ ये है कि इन ईच मार्केट वेयर आई लिव्ड आई वॉज वेरी हैप्पी बट आई वॉजंट कंटेंट. I'm not happy here, but I'm content. Why I'm not happy is obviously if the standard of living is so low, why would you be happy unless you know nothing better? और सोशल मीडिया पे वो भी नज़र आ जाता है कि यार बाहर तो रोड्स पे फुटपाथ भी होते हैं, पानी भी आता है. हम कराची में रहते हैं, हम तो पता नहीं किसको भत्ता देते हैं कि टैंकर्स लाए रात को. इसका मतलब पानी तो है. सो इट्स जस्ट दैट होल फीलिंग व्हाई आई एम नॉट हैप्पी. कंटेंट हूँ बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम हियर. Right. Does that kind of answer? Yeah, right. Yeah, and plus अभी story खत्म नहीं हुई ना. You can always move again. So you can always move out. Of course. The question was, it's a very secure space that you were in. You know, very big companies. You know, corporate space. ठीक है. अगर उस security को मैं थोड़ा सा shake करता हूँ, तो I'm gonna do my own thing. I'm gonna do my own thing in Pakistan. That's just it's the risk is suddenly that is too high, and so that's why I was I jumped on that. But coming back to Ezbuy, आपने वो figure out कर लिया, आपने कहा कि ठीक है I'm gonna start operation, and I believe 2018 that's when you started the operations as well. जी 2018 मार्च में piloting शुरू की, and we launched on 1st August, and to date we're the only, I think we're the second largest cross border in Pakistan if you discount Alibaba, which is Daraz. So yeah, alhamdulillah, it's been a great journey. It's been an awesome learning of setting up business in Pakistan, from investor funding to shareholder equity and legal issues, finding an office, finding the right people, आ रहे हैं, कौन कहाँ बैठ रहा है, launch करें, क्या hiccups आएंगी, teething problems to reaching. Mashallah, we have a good sound foundation right now. How many people are in the team now? We're like 28. Acha. And is this, would you say this is a profitable company now? It's profitable. And are you comfortable with where it is, or do you think there's like a huge opportunity to scale आने वाले वक्त में? No, I mean comfortable तो खैर मेरी philosophy नहीं है होना. So I always get this. I think in Pakistan, provided the environment is provided as far as funding goes, it can be anything it wants. Now, through artificial intelligence and big data and even vehicles ke liye co-sharing applications, we could wander off into a derivative. And we're in touch with our Chinese counterparts for that. Subsequently, Ezbuy, which is EZBUY, got bought by another larger Chinese company called Light in the Box. Okay. That is, so Light in the Box hai, Jingdong hai, और फिर ये Alibaba hai. Those were kind of the big three in China. तो हमारी discussions चल रही हैं, but I think this is the right space to be in right now, no regrets. E-commerce, retail and technology. Right. In terms of the products that are listed on the website, right? अगर कोई ballpark, how many SKUs are there essentially? So that was one of the learnings. So we launched with the largest range in Pakistan with 5 million SKUs. So 5 million products, and our vision was we buy the world for you. Right. But वो naive था, because शुरू में हमने जब launch किया तो लोग sofa sets order कर रहे और treadmills order कर रहे, वो ship से आ रही, and it just was a nightmare, volumetric weight, and it just didn't cut it. So eventually we reached a sweet spot. तो हमने कहा वो we buy the world for you से थोड़ा सा move on करते हैं. अब ये है कि we buy whatever you would like to buy, but the thing is कि we've come to less than a kg, and we're into basically female fashion, lingerie, tank tops, sneakers, bags, opticals, you name it. So we've kind of filtered out what we want to offer the public to around 2.5 million SKUs. Right. And these are primarily imported? These are all imported. These are all imported. 100%. और ये आपकी गारंटी है कि ये आके मिलेंगी लोग? So essentially there is AliExpress for a lot of people, which is Daraz. No, so there is Daraz, and there is the AliExpress. और the AliExpress नहीं तो Daraz Alibaba ना. हाँ, Alibaba. So Daraz में तो ये ना कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने प्राइमरली लोकल को टारगेट किया हुआ है, उसी को करते हैं, बट उसी के अंदर लिस्टिंग आपको नजर आ जाती है जी पाकिस्तान की है, चाइना की है, और आपको चाइनीज़ प्रोडक्ट्स भी मिल जाते हैं. जस्ट टेक्स अ लिटिल लॉन्गर, बट हो जाता है.
अली एक्सप्रेस के अंदर जो SKUs हैं बहुत ज़्यादा रहते हैं बिकॉज सर्विसिंग अ ग्लोबल मार्केट एंड सो उसका प्रॉब्लम ये आ जाता है कि पोस्टल ऑफिस में रुक जाती है कभी चीज़, कभी जो है जी उसके ऊपर ड्यूटी बड़ी सारी पड़ जाती है वगैरह वगैरह. आपके केस में मैंने जाके चीज़ ख़रीदी तो अब मुझे ये टेंशन नहीं है कि गायब हो जाएगी या ये फंस जाएगी, आएगी चीज़. So that's one of our unique selling propositions कि आप हमसे ऑर्डर करते हैं, we'll take care of the rest, और आपके पास चीज़ आ जाएगी 20 दिन से 30 दिन तक. ठीक है ऑल इन. राइट. When I said, जब आप पूछ रहे थे कि बाहर चीज़ें से आती हैं और अली एक्सप्रेस पर लिखा होता है लोकल चाइना, नॉट इन दैट सेंस. व्हाट आई मीन इट फ्रॉम अ सोर्सिंग सप्लाई से इन सेंस जो चीज़ें दराज कहता है कि यहाँ हैं वो एक्चुअली बनती नहीं है यहाँ. दैट मीन्स इट्स स्टॉक्ड लोकली. राइट. या एब्सोल्युटली. सो वी डोंट स्टॉक लोकली. सो जब आप ऑर्डर करते हैं इजी बाय पे तो ऑर्डर गिरता शंघाई में और हमारे पास भी गिरता है. ठीक है. And then we analyze it and then they source the product and then they send it over and then it clear customs and then it goes to them. And I think we're the largest in cash on delivery as well. Acha, so this is also, that's a risk. That's a huge risk. Right? And so what happens to the products that go back? Do they go back to China? Or No, they can't. They can't go back to China. So now you have to figure out. नहीं उनको साफ सूफ करके फिर हम चढ़ा देते हैं फ्लैश सेल पे. Right. इस केस में do you plan on integrating local suppliers also? No, we can integrate local suppliers. That's not an issue. And we have. अच्छा. हमने रमज़ान डील्स भी की हैं, हमने फ़िलिप्स के प्रोडक्ट्स भी किए हैं that is stocked locally. हम कोई भी चीज़ें कर रहे हैं, but like I said, we're kind of going into make Pakistan beautiful again. So we're going into more, I think 85-86% of our customers are female. Right. तो अगर हमने लॉरियल के साथ फॉर एग्जांपल किया, पर वो प्रोडक्ट्स यहाँ बनते नहीं हैं, वो इम्पोर्ट करते हैं. Absolutely, right. So वो मार्जिन सारे फिर उनके पास होते हैं. So by the time they give us the margin, we are more into now white label goods. So we're not into brands, we're into white label goods. And I'll tell you. What does that mean? That means non-branded. Okay. तो फॉर एग्जांपल क्या ले लूँ, आपका हेडसेट ले लेता हूँ. आपने हेडसेट सोनी या बोस या किसी भी अच्छी कंपनी का पहना होगा, you feel good about it. If we can provide you a headset non-branded for a fraction of the cost, that's a white label. So it doesn't have a label. इसी तरह t-shirts भी हैं, overcoats भी हैं, Right. sneakers भी हैं. Yeah. Right. And then ये तो आपने किया, and then you're also doing this other thing suddenly last year. Yeah, so when I was here, remember one of the companies I approved globally for McDonald's called KIAN Furniture? Yeah. They provide furniture for the quick service restaurant industry. तो उनका CEO दोस्त हो गया, तो दोस्ती रही. जहाँ भी मैं जाता था वो कोई सिगार का डब्बा ले आता था. I'm into cigars and what not, but वो जब मैं यहाँ आया उसने कहा कि यार मिडल ईस्ट अफ्रीका के लिए can you become our CEO? So I said, probably don't have the time for it, but I can set up the company and whatnot. And I'm not sure कि अभी उस level पे market है कि need to afford your furniture because it is a very high spec furniture. पर उनके 8 verticals हैं, all commercial mostly, and they are outdoor seating, horeca, hotels, restaurants, and then quick service restaurants, education में है, and then workplace solutions में है, old and age care homes में है, जो मेरा ख्याल पाकिस्तान में भी ज़रूरत नहीं है. तो 3-4 verticals पे I'm helping them and we build furniture as far as we can from here. सिर्फ अगर नहीं बन सकता फिर मैं import करूँगा. And I'm in the midst of setting up factories in India, Pakistan, and Cairo. I was just in Cairo last week, and I'm setting up a joint venture in Saudi Arabia. Saudi Arabia, it's very exciting. The biggest changes have happened in Saudi society in 3 years, more than probably the last 50 years. That'll have an impact on Pakistan positively as well. Right. तो बड़ा कुछ हो रहा है. How so? भाई Saudi Arabia is opening. How so? आप सिर्फ example लें कि if each household has an extra female who can drive, how many vehicles you would need, and how many women would need to be educated, how much new education places would need furniture. And if that furniture could also be made in Pakistan, because they don't have wood, they don't have steel, they don't have cheap labor. Yeah. It's such a big win-win that you can't imagine. Yeah. And so, जो अभी currently आप ये with KIAN Furniture कर रहे हैं, that's basically servicing the Middle East and African market. And Pakistan, जी. And also Pakistan. So it's also selling in Pakistan as well. जी. But with this particular thing, you're also sourcing from Pakistan. Primarily, also from India and Cairo. So our customers would be like McDonald's, KFC, Americana, Burger King
in QSR only. Our customers in hotels, Horeca, hotels, restaurants, cafes would be Movenpick, Ritz-Carlton, Sheraton, any hotel, right? Right. And our customers in education could be Beacon House. Right. तो जिनको जो भी नीड है, जो हर वर्टिकल जो है ना वो बहुत QSR में बहुत स्पेसिफाइड है. QSR से क्विक सर्विस रेस्टोरेंट. सही है. तो मैकडोनल्ड्स डिफाइन करता है कि कितने माइक्रोन्स की पाउडर कोट होनी चाहिए उनकी टेबल लेग पे. ठीक है. दे डिफाइन द प्राइस एज वेल. तो उस डेफिनेशन के हिसाब से हम वो बना फर्नीचर कहीं भी सकते हैं इफ़ वी हैव द एक्सपर्टीज. एंड सिंस आई हैव द एक्सपर्टीज आई चूज टू मेक इट इन पाकिस्तान. सही है. एंड सिंस तो आपको पता ही होगा कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को क्या हो रहा है. एंड लेट मी गो ओवर दिस. जो अगर एक रेस्टोरेंट $20,000 का फर्नीचर का होता था तो एक ज़माने में $1,000 होती थी लॉजिस्टिक्स फ्रॉम चाइना. इस वक्त $20,000 का फर्नीचर पैकेज है और $20,000 ही लॉजिस्टिक्स हो गई है. So people are not building many restaurants in the Middle East unless they can source close by, whether it be in Karachi or Cairo or even Delhi, Mumbai. तो इसलिए कर लेते हैं. And are you certain? Because again, Pakistan is not a very industrialized country. The talent requirement for आपको सर्विस सेक्टर में फिर भी मिल जाता है because आपके पास एक certain segment है 3-5% का जो कि यूनिवर्सिटीज़ जा रहा है और वहाँ से जाके टेक्नोक्रेटिक चीज़ें पढ़ रहा है. But this is labor intensive. Right, and so there is an entire demographic. You have a huge youth population, but unskilled essentially. Do you think that do you think that's a problem that's solvable? Yeah, I mean that's already solved. I think manufacturing is up in Pakistan because of whatever is happening geopolitically, and Pakistan, especially on the furniture scene, locally to apni provide kar raha. Very few things come from abroad, so there are already shops here which are specialized. Obviously ज़्यादातर wood और inlays में है, but I can take my specifications and I have all whatever I need, whether it be powder coating या pressurized laminate या जो कुछ भी है locally मिल जाएगा. जो नहीं मिलेगा वो importers already बैठे हुए हैं यहाँ, और जो वो बाकी चीज़ें रह जाएंगी वो हम import कर लेंगे. और मशीनरीज क्या आप import करेंगे? आपके पास सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं पाकिस्तान. मशीन सब हैं यहाँ. अच्छा, मशीन सब हैं. It's just connecting all of that together for the requirement that you need. ज़बरदस्त. थोड़ा सा मैं conversation को expand करूँगा, and I wanted to sort of explore the e-commerce side and then this side, but then I feel like you have such a retail interesting holistic retail में तो है ही है, but there are a few questions that I like to tinker your brain with. You mentioned a couple of times changing geopolitical situations and we are on the right side of the party, right? You've been connected to the Chinese quite well. How do you see the growth of China, and what do you think Pakistan as a country, in terms of potential, where do you see this growing? Because already retail में आपने देखा the bet essentially is कि भाई इन लोगों ने खरीदनी है चीज़ें, right? ये तमाम चीज़ें. But उसी के साथ साथ you have a young population. China is not only getting older, China is also getting more expensive. They're moving towards higher value goods and वो तमाम चीज़ें. Do you think there's an opportunity for Pakistan here, and do you think that opportunity will materialize in the future? So one of the things I learned from McDonald's is somebody asked Ray Kroc, will we be selling hamburgers in 2020 or something? He said, I don't know, but we'll be selling more than anybody else, most of whatever. So Pakistan has something that we didn't choose, but it has the right real estate. At McDonald's, you have to have the right real estate. You have to be in the right position. So we happen to have a real estate which happens to be right in the center of the region. You can't really do business. India can't do business with Central Asia or Iran or the Middle East without us. China can't do business with Central Asia or the Middle East without us. And similarly, the Middle East can't do business with an emerging economy. So जो चीनी है वो पागल नहीं है कि उन्होंने BRI बनाई है. This is, I've seen the plan, by the way, जो Communist Party का है for 30 years to come. If rolled out properly, and we should outsource as much as we can to them, we might mess it up ourselves. वो तो they'll do it, surgically, and of course we'll benefit. We'll benefit in big terms, GDP wise भी, manufacturing wise. अभी भी एक furniture है, because of what's happening geopolitically, furniture पे उन्होंने duty slap on कर दी है चाइना को. तो अब Chinese furniture एकदम महंगा हो गया है, logistics cost महंगी हो गई है. शूज़ और लेदर गुड्स पे भी उन्होंने ड्यूटीज़ डाल दी हैं नॉर्थ अमेरिका में. तो ये चीज़ कंटिन्यू करेगी, राइट? इट्स मोर देन अ स्पैट नाउ. तो चाइनीज़ विल ऑफ शोर इन टू साउथ ईस्ट एशिया एंड पाकिस्तान टू मेक स्टफ फॉर द मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका.
And I estimate in the next 3 to 5 years, maybe 3 million Chinese living here. 3 million Chinese. Maybe 4 million. ये मेरा अपना एस्टिमेट है. उनको सर्विस देने के लिए हम इजी बाय पे उनकी नूडल्स भी भेज सकते हैं जो मैगी नूडल्स से काफ़ी डिफरेंट है. Yeah. Interesting. And they're primarily going to be coming here to convert. Will they be coming here for BRI or will they be coming here to convert के वो वहाँ से बैठ के बिजनेस करने के नहीं यहाँ नहीं, वो यहाँ करें, अपने बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग कराने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्राइमरली. जी, ज़्यादातर एक्सपोर्ट. यहाँ तो बहुत छोटी मार्केट है उनके लिए. राइट. एक्सपोर्ट टू द मिडल ईस्ट एंड टू सेंट्रल एशिया एंड ऑल्सो टू अफ्रीका. और दैट क्रिएट अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट और शायद सिखा भी दें हमारी कौम को कि काम करना क्या होता है. So, because I feel like one of the major impediments with Pakistan is that productivity is very low, right? Your average person is not really bringing out that productivity. चाहे आप किसी इंडस्ट्री में भी चले जाएं, आपके from as simple as agriculture, बड़े के yield से आप निकाल लें, to industries and while you've rightfully said कि we have seen examples of Chinese mobile phone assembly and वो तो so examples exist करती हैं. I feel like there is a process requirement because I mean China was there as well once upon a time and so they learned how to do it. Do you think we can learn also? I mean कोई भी मुल्क in destined नहीं होता कि जो है ही फजूल मुल्क. I mean शंजन में जहाँ वॉलमार्ट में था there was a famine in the 60s. And the great-grandfather of our Chinese colleagues said that they were starving and people on the Hong Kong side used to send them rice bowls on little lanterns over the bay, over Shenzhen Bay. और उसी कौम को वो सारे ब्रिटिशर्स हफीमी कहते थे. ओपियम वॉर्स हुई थी. So I don't think it's that at all. I think role models and leadership counts. And especially in this world, I think beyond what the government needs to do, वो तो हम नहीं कर सकते change, but at least from a private enterprise sector, if you do it well and you are well intentioned with hard work, I mean, we're sitting on gold right now. I mean, people have no clue what Pakistan will happen to Pakistan, irrespective. सिर्फ ये कि कहाँ तक पहुँचता है optimally. मेरे अपने views हैं कि किस तरह optimally में पहुँचेगा, but I mean, that's for the government to handle. हम तो अपना कर रहे हैं. Would you be comfortable sharing those yeah views? I mean मुझे क्या मतलब I'll be comfortable. I think Pakistan needs to have peace with India. Right. You can't continue to have an enemy 7 times your size and grow optimally. What that means is it's a security environment. And what that means is obviously we need to spend 1/3 of our money on the armed forces because एक circle बन गया ना. So similarly I tell my Indian friends कि आप लोगों का कसूर ज़्यादा है. क्यों जी उनका कसूर है? बिकॉज आप बड़े भाई हैं. आप ज़्यादा गिविंग हो जाएं. ये एक अगर छोटा है और तंग कर रहा है आपको तो आप थोड़ा सा लाड प्यार दिखा दें. सो आई थिंक दिस नीड्स टू बी सेटल्ड. नंबर 1. दूसरी चीज़ आई थिंक सम स्ट्रक्चरल मैक्रो इकोनॉमिक चेंजेस नीड टू हैपन इन द कंट्री दैट वी आर नॉट सीइंग राइट नाउ. इम्पोर्ट्स पे भी, रेगुलेशन पे भी, एंड एट द राइट टाइम दिल हैपन. आई एम श्योर व्हेन द गवर्नमेंट हैज़ अ मैंडेट will happen. So yeah, I think Thoda sa if we can expand on the structure. So I was talking to the last podcast I did was with the senior economist of the World Bank, and he talked about the fact that import duties do not necessarily protect do not support the economy. All they do is that they protect the local competition जो कि basically अपने बाहर के competition से वो कर रहा होता है. He was big on free float dollar. He was like कि अगर import export को अगर normalize करना है तो वो dollar की pricing को करना चाहिए rather than these import duties. And that made a lot of sense to me. But a lot of times I hear Pakistan needs structural changes, but I'm unable to sort of put a finger on it. Is there anything that no, I mean, just take that example. He's right. मतलब import duties इतनी high करना on commodities and to define what's essential shouldn't be up to the government. Right. It's for me. अगर for example मैं कमा रहा हूँ 50,000 रुपये भी कमा रहा हूँ, मगर मैं जूता लेना चाहता हूँ और जहाँ मर्जी से branded unbranded लेना चाहता हूँ, what does the government have to do with it? So it protects, I think, bad quality people manufacturing here. Yeah. तो मेरा ख्याल है कि कितने ये साल में कलेक्ट करते होंगे importer duty से taxes. Obviously not enough for them to stop going and begging to IMF or Saudi Arabia, whoever. It's embarrassing now. So if you can't run a country after 70 years the way you've been doing, then change stuff. And if you can't change, then get out of the way, let somebody else run. Because जो पिछले हैं उन्होंने तो बेड़ागर कर ही लिया था. We need changes, we need import duty changes, we need changes to set up companies. It should take hours.
not months to set up a company. So easy and doing for business foreigners. essentially. Yeah, ease of doing business. Easy है, मैं ये नहीं कह रहा easy नहीं है. It's still very easy. There are no hindrances. And touch wood, it's been 3.5 years. Nobody's turned up at my door and said कि यार मुझे इतनी bribe चाहिए और ये envelope में कुछ पैसे. It just doesn't happen like this anymore. At least not in our sector. Right. But I'm not in manufacturing, so I'm sure gas या बिजली का connection चाहिए होगा तो कुछ और होगा. Right. And do you think, have you heard of the STZ, the Special Technology Zone Authority? And so they're essentially what they've done is, so they had the SEZs, right, for Rashakai and Faisalabad and all of those areas. And they've added an STZA with that, and they've completely autonomized that and said, Ji, technology related companies, so for example, jo aapki Ezbuy hai, they can set up a space within the STZA, or if they have their own building, they can have a deal with them and call that an STZA. What that does is कि वो single window operation है, taxes, everything all adult there, you're completely protected, so nobody comes in from उस तरह से. I suspect it's for probably software development, technology development, because Pakistan is doing really well in that. और investment भी आ रही है fintechs के लिए, exports भी हम कर रहे हैं, and there's a lot of turnover in the industry. I suspect it's not for retail because हम लोग जो भी कर रहे हैं, हम लोग तो products दे रहे हैं, तो its product will be outside that bubble. Right. So in your scope essentially. Software development नहीं कर रहे हैं. Technology आप उस पे नहीं कर, technology like you're IT enabled, but you're not necessarily an IT company. Exactly. Interesting, sir. We're at the 1 hour 10 minute mark. I wanted to explore so much more, but your story was just so fascinating, and I don't know. I'd love to see the audience ka kaisa hai. Maybe we'll have another conversation in a few months whenever you're in Islamabad. Welcome. Thank you so much for this insightful conversation, for taking the time out, sharing your journey. So many things to be inspired from. Thank you for having me. Thank you for having me. Yeah, and I wish Ezbuy all the. Oh, sorry. Yes, mandatory question I ask every guest. And you've spoken a lot about that already, but we're at 2021 right now. You know what you know today, the challenges as well as the opportunities. What would you say about how would you see Pakistan of 2050 in your understanding based on the things that you've seen globally happening? और आपको लगता है कि अगर वो उसी तरह होती रहें तो आपको क्या लगता है कि 30 साल में पाकिस्तान कहाँ होगा? 2050 is far away. मैं तो अपनी career plan करता हूँ 3 से 5 साल. Right. Maximum 10 साल. I think if we just provide a little bit of वही मैं कह रहा था regulation and let people get on with whatever they're doing, welcome investment from abroad, by 2030, it's another 10 years, 35, we should be a major production hub. Production hub, exporting. And it would be a very vibrant society, supply chain wise as well as retail. And if we can settle down our spat with India, and we just put maybe 100 rupees or 1,000 rupees per truck, इतना पैसा आ जाएगा इस मुल्क में कि आपको पता नहीं होगा करना क्या है. So yeah, hold on to your pants. So that sounds exciting for a young person like me. That sounds very exciting. Sir, thank you so very much for this. And I wish Ezbuy and also KIAN Furniture. Actually, I'm very interested in that as well. कि वो किस तरह से होता है, because that's manufacturing, and that's interesting to see how that sort of expands. Good luck for that. For all of you guys, thank you so much for watching. अगर आपको एपिसोड पसंद आई अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा. YouTube वाले लाइक का बटन दबाएंगे, एंगेजमेंट बढ़ेगा, ज़्यादा लोगों से हमारी कॉन्वर्सेशन पहुंचेगी. फिर से एक दफ़ा मेंशन कर देता हूँ, पाकिस्तान पे which is a new podcast that we started. The link is down below. You can check that out. The first episode has already, I think the second episode has also gone out, so you can check that. Current affairs, regional politics, वो सारी हम वहाँ कवर करते हैं. ऑडियो प्लेटफॉर्म्स वाले सब्सक्राइब कर बटन दबाएंगे, आने वाले एपिसोड्स का नोटिफिकेशन मिलेगी. फेसबुक वाले TBT कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर डिफरेंट हम फीडबैक भी लेते हैं, गेस्ट रिकमेंडेशंस भी लेते हैं, डिफरेंट कॉन्वर्सेशंस करते हैं. यू कैन जॉइन दैट कम्युनिटी. इसी के साथ साथ ईजी पैसा जैज़कास्ट यहाँ पर कहीं पर अपीयर हो रहा है. यू कैन सपोर्ट द चैनल इफ यूड लाइक. वी एक्सेप्ट एनीथिंग फ्रॉम 1 rupee to as much as you'd like. It's the thought that counts. But anyways, this was Muzamil Hasan. You were watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.